Assalamu alaikum friends, my name is Mohammed Nisar Khan and welcome to the day 10 of the 21 days learning SQL challenge. Hope everybody's doing good, everybody's doing fine. And yesterday if you have watched the video or the live which you have seen, it went up to around 4 hours and the recorded lecture was around 3 hours. So it is, was much more than our limit. But anyways, the target is to, do the go progress by step and progressively learn it, and we end up recording 3 hour session which was way over our prescribed limit. So what we are going to do today, some changes that we will be moving with day 10, and today I will be only recording the most important I would be recording only the most important things here, especially the query writing, and I would make sure that to pause the video while doing my own research, and I will be telling you that I have got it from there. But during my ragtag research, I would be doing it without recording it, so that we could compress the video within those 2 hours limit. So all right then, let's move forward and let's see what we got today. For day 10, it is question 1, and I've said that day 10 is on. It says that good, day 10 starts now, no warm up, we move forward. Today's focus: advanced ranking plus percentile plus executive style insights. Okay, day 10, question 1. Okay, business scenario: the CEO wants to identify top 10 highest spending customers across the entire company. Okay, so CEO wants to know the top 10% highest spending customers across the company. Okay, so not the top 10%, not top 10 customers, but rather top 10%. So it is a percentage thing. Okay, and now he also wants customer ID, customer name, total lifetime sales, and their percentile ranking with also their percentages. Okay, return only the customers who fall in the top 10 based on their lifetime sales. Based on their lifetime sales, only return those customers who are in the top 10 based on the lifetime sales. Now what are the hints here? Step 1, I have to aggregate total sales per customer. Okay, aggregate total sales per customer. Okay, step 2, use a window percentile function. Okay, window percentile function. Okay, now you're looking for something like percent rank, entile, or assume okay, distinct. Think carefully about which one makes the most business sense. Okay, among these, which one makes the most business sense according to our question? So that is going on with the hints, and the hints are already getting powerful at this point because it is allowing me to think beyond my comfort zone, and starting to get the logic of SQL. Now think carefully about which make the work businessman. Do not hard code row numbers. Do not filter before calculating the percentile. Okay, these are the routine hints. Percentage logic must apply over the entire database, not partitions. So with that means that no, there won't be any partition for any particular customer. So when ready, write the query. No rushing, precision over speed. Day 10, question 1. So yeah, so there seems to be a problem with my SQL, but anyways, let's go. Let's hit the query board now. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार खान है और आज डे 10 है ऑफ द 21 डे एज लर्निंग सीक्वल चैलेंज। ठीक है, आप सारे खैरियत से होंगे उम्मीद है। और आज का दिन डे 10 है। ठीक है, और आज क्योंकि आपको पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा डे 9 के जो लाइव सेशन था वो हमारा 3 घंटे तक चला गया था, लेकिन हमारा जो एक चैलेंज है वो 2 घंटे का है, कि मतलब हम 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो ये रोड में मुझे चैट ने दिया है, मैंने सिर्फ वही उन सवालात को हर हाल में उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उस वजह से वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो मेरी रिकॉर्डिंग भी 3 घंटे तक चली गई थी। तो इस बार हम इस तरह करेंगे कि जो हमारा रिसर्च का पार्ट होगा उस पार्ट को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, स्किप इन सेंस कि मतलब उसको उस पार्ट को हम पास करेंगे। लेकिन ये होगा कि जब मैं उसका रिसर्च कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है और इस प्लेटफॉर्म से मुझे यही आइडिया हुआ था और इस तरह का मैंने इस रिसर्च को निकाला है। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो बस रिजल्ट्स जो होंगे ना रिसर्च के वो, अदरवाइज जो क्यूरी राइटिंग है वो आपके सामने मैं लिखूँगा। ठीक है, क्यूरी राइटिंग पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यूरी राइटिंग का ईजी सीन है, लेकिन
इसके लिए हमने वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा इशू होगा। आप मेरे साथ फिर एज दे से बेयर विद मी। और ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योरी आपके सामने लिखूंगा, लेकिन वो जो रिसर्च का पार्ट है क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और वो जब उसका हिस्सा होता है तो फिर वो 2 घंटे की लिमिट को वो क्रॉस कर देता है। तो एनीवेज, आज का हमारा फोकस होगा डे 10 का एडवांस रैंकिंग के ऊपर, परसेंटाइल्स के ऊपर, एग्जीक्यूटिव स्टाइल इंसाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब डे 1 है, डे 1 नहीं, डे 10 है, सॉरी, क्वेश्चन 1 है। बिजनेस सिनेरियो है, वो कहता है यार जो सीईओ है तुम्हारे कंपनी का, उसको चाहिए टॉप 10% ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर्स अक्रॉस इंटायर कंपनी। उसको ये बंदे चाहिए कि भाई जो टॉप 10% आपके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 बंदे हैं, ठीक है, और नहीं 10 बंदे नहीं, आपके पास जितने भी बंदे हैं मैक्सिमम, ठीक है, उसमें जो टॉप 10% है, टॉप 10% वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपकी कंपनी से सामान ख़रीदा है। ठीक है, वो एक होता है ना, एक गाहक आपका इस तरह होता है कंपनी में, जो रेगुलर आपसे चीज़ें ख़रीद रहा होता है, जो ज़्यादा बल्क्स में ख़रीदता है, और रेगुलर कस्टमर है, मतलब इस तरह के ये जो सीईओ अब ये पता करना चाहता है कि हाँ भाई हमारे रेगुलर कस्टमर्स कौन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एज सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर टॉप 10 में मैं क्यों जानूँ, वो इस वजह से कि यार मुझे पता चले कि भाई क्या मेरे पास इस तरह की कस्टमर रिटेंशन है कि वो मेरे से रेगुलर ख़रीद रहे हैं। क्योंकि जब आप रेगुलर किसी कंपनी से चीज़ें खरीदते हो तो फिर आप उसके हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर बन जाते हो। तो सीईओ ये पता करना चाह रहा है कि भाई हमारी कस्टमर रिटेंशन के ऊपर वो देखना चाह रहा है कि हमारी कस्टमर की रिटेंशन कितनी है, कि आया हम कस्टमर रिटेन कर पा रहे हैं, या हमारा कुछ क्या सीन है, मतलब कौन से कस्टमर्स हमारे बड़े लॉयल हैं, तो उसके लिए हम कुछ और फैसिलिटीज़ उसको किस तरह हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कस्टमर रिटेंशन के ऊपर बेसिकली सीईओ ये पूछना चाह रहा है, ये इसकी वजह ये होती है इस सवाल की नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें यह होगा कि वो टॉप 10 कस्टमर्स वो नहीं मांग रहा, वो कह रहा है टॉप 10%। ठीक है, परसेंट में वो 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग डिपेंडिंग के मतलब वो टॉप 10% वो कस्टमर्स कितने हैं, 90% उसके बाद नीचे है। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, और टोटल लाइफ टाइम सेल चाहिए, और परसेंटाइल रैंकिंग चाहिए। ठीक है भाई, अब रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई सिर्फ वही कस्टमर्स आपके पास शो हो जो कि टॉप 10% में आ रहे हो बेस्ड ऑन द लाइफ टाइम सेल्स। ठीक है, अब ये है कि अब ये है कि जो हिंट्स हैं वो हमने केयरफुली पढ़े। सबसे पहले तो हमने एग्रीगेट करना है, तो एग्रीगेट जैसे ही मुझे समझ आया, क्योंकि मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तकरीबन काफ़ी दिनों से, तो एग्रीगेट में हमेशा एक CTE पे करता हूँ, और उसके बाद विंडो फंक्शन में आके मैं उसकी वो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको परफॉर्म करता हूँ, दूसरा वो जो स्टेप है उसको परफॉर्म करता हूँ, तो उससे ये होता है कि वो जो सवाल है वो एक ही चीज़ में हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई स्टेप 2 में आपने विंडोज़ परसेंटाइल फंक्शन का बेतरीका इस्तेमाल करना है, और अब ये कह रहे हैं कि यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक, आप कौन सी चीज़ का पता कर रहे हो, परसेंट रैंक, एंटाइल, या का अब इन ये तीन है, ये परसेंटाइल विंडो फंक्शन मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि ये, क्योंकि उसको थोड़ा सा रिसर्च करूँगा ये यूज़ होती है, तो कहते हैं कि यार इन सब में चेक करो कि किसका बिजनेस सेंस सबसे बेस्ट है। ठीक है, बिजनेस सेंस इन द सेंस मतलब सवाल को कौन सा परसेंटाइल का जो फंक्शन है वो सूट करता है। ठीक है, अब ये कहता है कि हार्ड कोड नहीं करना रो नंबर्स को। ठीक है, फ़िल्टर नहीं लगाना परसेंटाइज से पहले, इसका मतलब फ़िल्टर नहीं लगाना, इसका मतलब ये है कि आपने फ़िल्टर लगाना है लेकिन परसेंटाइल कैलकुलेट करते वक्त नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप समझ आ रहे हो, पैटर्न दिमाग में बैठ गया है ना, बस अभी थोड़ा सा वो हो गया, एक वो आउटलाइन बन गया है। परसेंटाइल लॉजिक मस्ट अप्लाई ओवर द एंटायर डेटा सेट। अब जो परसेंटाइल का लॉजिक है वो सारा डेटा सेट पे अप्लाई होना चाहिए, पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन हमने वो प्रोडक्ट में पढ़ा था, अगर 9 में आपने देखा हो, कहता है कि भाई जब तैयार हो तो लिखो, और कोई रशिंग नहीं है। ठीक है, प्रिसीजन ओवर स्पीड। ठीक है, हमें स्पीड नहीं है, हमें तुम्हारा प्रिसीजन चाहिए, तुम्हें चीज़ समझ आनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो अब इधर चलते हैं, चलिए क्यूरी बोर्ड की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ये क्रैश कर गया है। ठीक है, तो एनीवेज क्योंकि हमने क्यूरी लिखनी है तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, तो चलो हम क्यूरी लिखते हैं, इस पर थोड़ा सा काम भी करते हैं और क्यूरी लिखते हैं। ओके, सबसे पहले अच्छा, सेलेक्ट सेलेक्ट कस्टमर
selecting customer key. Okay, then customer first name, then customer last name, then customer last name, then save. उसके बाद sum, sales amount is total lifetime sales from fact internet sale join dim customer on fact internet sales customer key dim customer key. Sales dim customer group customer key dim customer first name dim customer last name. Okay. Customer key is customer ID. Okay, customer first name is customer last name. Okay. Fact internet sales some sales amount total lifetime sales. ठीक है. Fact on customer sales customer key dim customer group by. Okay. Yes. Customer sales is from customer
customer sale, select customer ID, first customer first name, customer last name, and so this is select customer ID, customer name, and some sales amount is total lifetime sales, total lifetime sales. Okay, total lifetime sales from customer, from customer ID. Now I would be doing it. Let's percentage contribution 100, select lifetime, overall average. Okay, or no partition by. Okay, दूसरा परसेंटाइल का रैंक लगाने, परसेंट रैंक, ठीक है, परसेंट रैंक, percent rank, percent rank for what we want to calculate. Assalamu alaikum friends, my name is Mohammed Nisar Khan and welcome to the day 12 percentage contribution. Percent rank can be the relative rank minus 1 divided by. Assalamu alaikum friends, this is what we want to use, and this is perfect because it's returning values and rank each other. So this is the Assalamu alaikum दोस्तों, मेरा नाम is the case. Okay. Now अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार खान है। उम्मीद है आप सारे खैरियत। परसेंट को सारों के साथ कंपेयर करना है तो ओवर sales is percent, contribution is percentage, contribution, contribution. Okay. Customers there. Now why are they getting red? Is it the problem of a comma? No, no. Red क्यों हो रहा है? वाह, our percentage is yes.
sensor should be in top to bottom, so DESC. To the left hand save. Why is it red? I also added the I also calculated its overall percentage here. Overall percentage. Comma. Okay. With that being said, now we have to apply the filter. Now what we would do, what we did here, select customer from customer save, not cross join. Why we use cross join? When we want to compare a single value, say an average, with all other values on the table. Okay, we use for that we use cross join. Okay, so what we have to select for our final act, now. Okay, so we have to select customer ID now. Okay, do not use hardcode rows. Okay, do not filter for in. I'm filtering after percentile. Percentile logic must apply our entire data set. Okay, entire data set. Percentile logic is an entire data set. So if we want to apply to our entire data set, then we have to select where okay, from, for example, from overall percentage, where percentage country, no, per percentage of caps lock P E R percentage contribution, where percentage contribution is less than is greater than 10%. Greater than sign is where percentage contribution is greater than 0.10%, and we will order them by total lifetime save DSC. Okay, it makes sense. Okay, the answer is
Friends, for question 1 of day 10, I have come up with this. I have formed a CTE here, a routine CTE which we have been practicing over time, and I have assigned them because ChatGPT asked me for customer ID, so I selected the customer key as my customer ID, first name, last name, and obviously the sum total sales amount, total lifetime sale. Okay, routine, and then I have done my CTE here. Okay, group by customer key and all. Then after that I had to select. I went with the, because I knew in this thing that we had to apply three steps. Number one, a total aggregate. Number two, Windows function, and number three, we have to apply a filter. Okay, so I knew, and that's why I had just put a comma here, and then I selected it as overall percentage. I had assigned it a name, and then I have selected the rank, customer ID, and all these total lifetime sales. And then I have selected this. I had an option to choose from, but I had selected the percent rank because I checked it from Google and for the related percentile, because I want because it was related, because I was targeting the related and also most importantly ranking percentile functions. Okay, so while the above functions were these functions like percentile continuous and percentile discrete continuous. These are when it is used mostly in statistical context, the continuous one and the discrete one, and they return actual values. Now I wanted the ranking percentile functions. Okay, so I went with this 1% rank, okay, with this window function. And then obviously I had to apply over, because every the you can say the national symbol or the international universal symbol of any Windows function is over, because with over you connect that particular analytical function which you are applying, like percent rank here, with overall all the columns or rows of the data, mostly all the rows of the data. So then we have ordered them by total lifetime sale in descending order, and I have assigned it as percentage contribution. Okay, and from customer sales. And after that, if you remember, ChatGPT has explicitly told us that the percentile logic must be applied our entire data set, not partition. And from these hints, I was focusing on selecting specific column names for my final filter. But what I ended up doing, that I realized I managed to see it on time, because there was nothing about partition which was mentioned. So I just went with the entire data set. So entire data set, we use this star which selects the overall data sets, and from overall percentage, which was this. And then I applied my filter that the percentage contribution which is mentioned here should be greater than 10%. And then we ordered them by total lifetime sales. Okay, and total lifetime sales, and in the descending order, means top to bottom. And that is how we ended up with these results. Overall, if you see, there is no error in the data, there is no red lines, the result is fine. And now the only thing is that we have to paste it on ChatGPT, and let's see what ChatGPT has to say. Over to ChatGPT. तो दोस्तों ये सीन था कि सवाल को जब मैंने गौर से पढ़ा, तो इसमें मेरे पास तीन स्टेप्स थे जो मुझे समझ आई। पहला तो एग्रीगेट इसने बता दिया था, ठीक है, एग्रीगेट आपने करना है। दूसरा उसने बताया कि आपने विंडो परसेंटाइल का फंक्शन लगाना है। और तीसरा ये था कि उसने ख़ुद भी कहा था कि यार आपने फ़िल्टर जो है, यहाँ पे फ़िल्टर की कहीं बात की थी कि भाई आपने फ़िल्टर जो करना है, आपने फ़िल्टर करने से फ़िल्टर आपने डू नॉट फिल्टर बिफोर कैलकुलेटिंग परसेंटाइल, परसेंटाइल से पहले फिल्टर नहीं करना। तो इसका मतलब ये था कि मैंने फ़िल्टर भी करना है, ठीक है। और मुझे बाद में समझ भी आ गई थी, क्योंकि जब मैं ओवरऑल, उसके बाद एक और पॉइंट इसने लिखा था कि परसेंटाइल लॉजिक जो है वो ओवरऑल डेटा सेट पे अप्लाई होगा, ठीक है। ओवरऑल डेटा सेट का मतलब ये है कि वो जो परसेंटाइल का लॉजिक आपने लगाया है वो सारे डेटा सेट पर आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने फ़िल्टर उस पर लगाना है। तो ये 3 स्टेप्स थे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट था कि उसने कहा था कि भाई आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आपने खुद चूज़ करना है कि इसमें क्या है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि भाई कौन सा बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा परसेंटाइल फंक्शंस के ऊपर मैंने इससे पूछा, तो उसने कहा यार ये तो प्राइमरी जो टाइप्स हैं परसेंटाइल फंक्शन की, SQL की कोर परसेंटाइल, ये कंटिन्यूस वाला है, ठीक है, जो कि अमूमन स्टेटिस्टिकल मीडियन, ये हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा डिस्क्रीट वाला है, ये कट ऑफ के लिए यूज़ हो सकता है। ये भी मेरा दिमाग होता है कि इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ChatGPT ने कहा था कि भाई ये रैंकिंग के लिए,
क्योंकि आपने रैंक भी करना है इनको। तो उसके लिए जो रैंकिंग के परसेंटाइल फंक्शंस है ना, वो ये तीन थे, ठीक है। तो उसमें परसेंट रैंक मुझे मुनासिब लगा, मैंने इसको अप्लाई किया, ठीक है। ये मेरे विंडोज़ फंक्शन में अप्लाई हुआ। तो अब इस क्यूरी को लिखने के लिए सबसे पहले तो वो जो एग्रीगेट के लिए मैंने वो काम किया था, तो चैट ने कहा था कि यार मुझे सर्टन एक्स वाई जी चीज़ें चाहिए। तो उस पर जैसे कस्टमर आईडी उसको चाहिए था, तो मैंने उसके लिए कस्टमर की सेलेक्ट किया। कस्टमर नेम के लिए पिछले डे 9 में भी उसने, चैट ने मुझे कहा था कि भाई जब भी आपसे कस्टमर का नाम पूछा जाए तो आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों शो करो, ठीक है। अगर अगर वो भी तुमसे नहीं हो रहा, अगर तुम्हारा मूड नहीं हो रहा, तो अगर तुमने सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करना है तो उसका जेंडर खामा खा मस्ट मेंशन करो, क्योंकि अमूमन उससे बंदे के नाम सीरियसली आइडेंटिफाई नहीं होता। जब भी कस्टमर का नाम आए तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है टोटल सेल्स, जो कि एग्रीगेट के लिए मैंने यूज़ किया है, ठीक है। बाकी वो जॉइंस जो रूटीन से हम पढ़े, हमारा एक पैटर्न बन गया है, हमें वो चीज़ समझ आ गई है। और उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे तीन ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसके बाद मेरे विंडोज़ और उसके बाद फिल्टर, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है कॉमा लगाया, यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज सेलेक्ट किया, और यहाँ से क्योंकि एक दफ़ा ग्रुप बाई हो गए थे ये सारे, ठीक है। तो फिर मैंने सेलेक्ट किया कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, टोटल लाइफ टाइम सेल, ठीक है। और उसके बाद मैंने लगा दिया परसेंट रैंक। अब परसेंट रैंक जो है ये विंडोज़ का फंक्शन है, ये एनालिटिकल फंक्शन है, जो कि यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इसको देखा है, ठीक है, इसको समझा है, क्योंकि यहाँ मुझे आइडिया हो गया था कि आप इसको क्या करना है। एक दफ़ा जब भी आप विंडोज़ फंक्शन लगाते हो तो उसके बाद आप ओवर लगाते हो। जो ओवर जो है ये एक बैनुल अक़वामी, जिसे कह सकते हैं इंटरनेशनल सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये विंडोज़ फंक्शन है, दूसरा ये कि ये जो आपका ये स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे परसेंट का फंक्शन है, इसको ये कनेक्ट करता है सारे टेबल के जितने भी रोज़ हैं सब के साथ, ठीक है। तो ये ओवर के जब भी यूज़ हो तो समझ जाओ ये विंडोज़ फंक्शन है, और ये चीज़, ये जो परसेंट रैंक है ये इसको सारे रोज़ के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसका आइडिया मुझे ऑब्वियसली मैंने जो प्रीवियस में नोट्स कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी इनको एक दफ़ा नज़र देख लेता हूँ तो रिवीजन भी हो जाती है। और वो एक जैसे कहते हैं ना, क्लिक हो जाता है चीज़ कि यार अब अच्छा ये भी हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस है। तो अब मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद मैंने किया ऑर्डर बाय, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर लाइन है, जो ऑर्डर है वो क्या हो, वो लाइफ टाइम सेल्स का हो, और किस ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये ओवर, बस इसको सिंपल ओवर कर दिया, परसेंट रैंक था, ठीक है। और उसको मैंने कर दिया परसेंटेज मेरा कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। मतलब ये मुझे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देगा मेरे कस्टमर सेल्स का, ठीक है। और उसके बाद मैंने लगाना था फ़िल्टर। और यहाँ पे आके वही बात मुझे याद आई कि मैं तो पहले तो ना यहाँ से देख के मैं ये स्पेसिफिक टेबल कॉलम्स में से, सॉरी कॉलम्स में सेलेक्ट करने वाला था। फिर मैंने जब वो देखा जो ये है इंटायर डेटा सेट, तब मुझे याद आया कि अच्छा ये करना है, कि मतलब क्योंकि मुझे सारा डेटा सेट पे वो परसेंटेज का जो फॉर विंडो फंक्शन मैंने निकाला है उसको सारों पे अप्लाई करना था। तो मैंने इसको स्टार लगाया है, तो उससे ये होगा कि सब पे अप्लाई होगा। उसके बाद मैंने उस पर फ़िल्टर लगाया, मैंने कहा यार जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है ना, अब तुमने लगा तो दिया है, अब मुझे जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चाहिए सिर्फ मुझे उन लोगों का चाहिए जो उनका कंट्रीब्यूशन 10% से ज़्यादा है, ठीक है। 10% है, ये इंक्लूसिव ऑफ 10%, 10% और मोर देन 10%, ओके। 10% या 10% से ज़्यादा, इसको इस तरह करके चेक करते हैं कि कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इधर लिखते हैं। ये क्या है, नंबर वन रैंक है, देखिए रैंक हो गया। कस्टमर आईडी ओलिविया वाइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है वही आ रहा है, ठीक है, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब ये करते हैं कि क्योंकि हमारे कोड में कोई रेड लाइन नहीं है, कोड में कोई एरर नहीं आ रहा, रिजल्ट्स भी परफेक्टली फाइन आ रहे हैं, तो अब हम अगला काम करते हैं, अगला स्टेप जो कि है चैट जीपीटी के साथ इसको शेयर करेंगे, और चैट जीपीटी बाबा हमें बताएंगे कि आगे क्या सीन करना है इसके साथ। चैट जीपीटी इस पे अपने फाइनल थॉट्स देंगे, और उससे हमारी लर्निंग भी होगी। इसको कॉपी करते हैं, इधर आते हैं, इधर इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब इंटर, now I've pasted in ChatGPT. Now that I've pasted it in ChatGPT, it says that
Alright, let's review this properly. First, good instincts. You aggregated correctly per customer, use percentile window function, applied window over entire data set, no partition, filtered outer computing percentile, structural is sorted. Now the critical issue, important. You used this, okay, over this by, and filtered with where contribution is get. The problem, percent rank works like this. Highest value 0, lowest value 1. Okay, because you ordered DEC, the biggest spender gets 0. That means where percentage contribution, you are actually removing the top 10% and keeping bottom 90%. That is opposite of the CEO's request. Okay, so where we went wrong, I think so. We did actually the exact opposite of what CEO's request. Okay, so where we went wrong, let's study it. Why this happens? Because percentage is simplifier. Rank minus 1 divided by total rows minus 1. When descending ordering, highest spender is equal to 0, value increases, sales increase, so top 10%. Okay, so top 10% means, oh, percentage less than, okay. Okay, correct approaches. That gives you top 10%. Okay. So what I have done here is that I have applied the formula with the correct intention, but the results which I have received here at this point are the ones which are the bottom 90%. And because there was a thought that the data was a lot. So but anyways, let's this is the learning. And I had to to get, because I've already used DEC ordering where the highest spenders get 0, so I had to use this less than equal to 10, not greater than equal to 10. Okay, so the two correct 2%, keep percentage range, change the filter. Okay, change the filter. More business accurate method, cumulative distance over, then apply where cumulative value this. Why this one reflects cumulative? It aligns more intuitively with X%. In real analytical calculus is usually preferred for this type of question. Okay. So the final evaluation is that aggregation is status this, window usage is this, business alignment is this, structural clarity is this, you were close, this was a semantic mistake, not structural one, that is progress. Question 2, top 3 products with each year based on total sales. Okay, so that after that we will be moving to question 3. So there was this semantic mistake. Now the CUME dist, the calculated rows with values less than equal to current and total rows. So it is saying that everything is fine, but more business accurate method is this. Cumulative distance over order by total lifetime sale. Okay, and then where the cumulative value, both are correct, I think so. Percentage contribution is less than equal to, you have to just do this. Okay, no, this one, no, this one, this one. All right, this one. No. Okay, this one. Olivia White, top one versus Nicole Nada. Percentage contribution 0, 5, 0, 0, 0, 0. Okay, so this is the lifetime sale. So what is the business accurate method? Let's see it. Let's apply this cumulative distance, cumulative distinct, and where the, because I have there is literally no change. It is just showing 0. It is giving more accurate. E minus, that means the value is, it is almost 0, and I will just keep it
even though it is recommending the cumulative distance for business, but I think so the percent rank is better. Okay, okay, so that would be good, that would be fine. And with that being said, Caroline Henderson. Nicole Nada. Okay. It is okay, so in real analytical environment, it is asked for cumulative this. So we would do what ChatGPT says. Okay. And there is no change in the result, it's just this. Okay. So there is no worries, we just have to change the filter. Filtering wrong. Okay. So with that being said, we have done the required changes, and now let's move to question 2 of day 10. तो दोस्तों ये मैंने शेयर कर दिया था ChatGPT के साथ. ChatGPT ने कहा कि अच्छा इंस्टिंक्ट है. एग्रीगेट भी करेक्ट ही कर दिया है. टोटल कस्ट एग्रीगेट भी सब कुछ ठीक है. परसेंटाइल फंक्शन भी यूज़ किया है. डाटा सेट पार्टीशन भी यूज़ नहीं किया. स्ट्रक्चरली दोनों सब कुछ ठीक किया. फ़िल्टर भी कर दिया है. आफ्टर कंप्यूटिंग परसेंटाइल को कंप्यूट करने के बाद स्ट्रक्चरली ये सब कुछ ठीक है. लेकिन अब क्रिटिकल इशू इसमें क्या है. क्रिटिकल इशू जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ख़ास है. ठीक है. वो कह रहा है कि भाई तुमने इस्तेमाल किया है परसेंट रैंक ओवर ऑर्डर, और इसको तुमने DESC कर दिया है. ठीक है. आपने उसको टॉप टू बॉटम कर दिया है, और तुमने फ़िल्टर लगाया है ग्रेटर देन 0.0. ठीक है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि जब आप इसको DSC लगा रहे हो, परसेंट रैंक क्या करता है, वर्क्स लाइक दिस. वो क्या कहता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ना उसको 0 रैंक करता है, और लोएस्ट को 1. ठीक है. अब क्योंकि तुमने उसको DSC किया है, तो जो बिगेस्ट स्पेंडर है ना उसको रैंक जो मिलेगा वो 0 मिलेगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. 0 आ गया. ठीक है. बिकॉज यू हैव ऑर्डर्ड DESC. ठीक है. और जो बिगेस्ट स्पेंडर है उसको 0 मिलेगा. दैट मीन्स दैट जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जब आपने ग्रेटर देन 10 लगा दिया, तो यू आर एक्चुअली रिमूविंग टॉप 10% एंड कीपिंग द बॉटम 10. ठीक है. तो इसमें ये सीन था कि आपने वो बॉटम 10 को रख दिया, और ठीक है, हाईएस्ट रैंक परसेंट. तो अब इसका ये फार्मूला ये बताता है कि बिगेस्ट स्पेंडर 0 और वैल्यू इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे सेल्स कम होती है. तो टॉप 10 को आपको असल में जो फ़िल्टर लगाना था वो ये था, लेस देन 10, जब आप DSC लगाते हो. ठीक है. अगर आप DSC नहीं लगाते, ठीक है, और टोटल सेल्स को DSC नहीं लगाते, तो फिर आपका ये वाला फ़िल्टर भी ठीक था. तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने इसका फ़िल्टर चेंज करना है, तो ये लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मैंने ये लगाया था ना, मैंने जो लगाया था वो ये था. ठीक है. तो जब मैंने ये लगाया, तो फिर मेरा जो आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था कि ओलिविया का आ रहा था, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही थी, 4000. ठीक है. 4000. तो ये बॉटम 90% को शो कर रहा था. अब इसको उसने कहा कि भाई क्योंकि तुमने डिसेंडिंग ऑर्डर का लगा दिया है, ठीक है, तुमने डिसेंडिंग ऑर्डर का लगा दिया है, तो अब तुम इस तरह करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का लगाते थे, तो इसी वजह से ये आंसर आ रहा था. बॉटम 90% आ रहे थे. अब तुमने इसको डिसेंडिंग की वजह से जब तुमने ग्रेटर का फिल्टर लगाया ना, तो बॉटम 90 शो हो रहा था, टॉप 10 ख़त्म हो गए थे. ठीक है. तो अब इसकी जगह ये करना है कि आपने लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दिया है, इसको एंटर कर दिया. अब निकोल नाड़ा आ गया. अब ये 13,000 हो गया. अब ये एक्यूरेट आ रहा है. ठीक है.
अब इसने कहा कि यार इसका इससे भी अच्छा मेथड, क्योंकि इसमें ज़ीरो रैंक, ज़ीरो वन का रैंक होता है परसेंट का ना, तो अब जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें उसमें अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो उसमें हम अमूमन यूज़ करते हैं कैमुलेटिव डिस कैमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सारा कुछ वही है, बस सिर्फ ये फ़िल्टर वाला चेंज करें, तो इससे होता है रिफ्लेक्ट कम्युलेटिव, और ये अलाइन ज़्यादा करता है टॉपिक्स के साथ, और रियल एनालिटिकल एनवायरनमेंट में ये, तो बस इसको सिर्फ हमने चेंज कर दिया। बाकी सब कुछ ठीक था, इसने कहा सेमेंटिक मिस्टेक है, स्ट्रक्चरल वन नहीं, और ये प्रोग्रेस है, तो बस ये ठीक था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टू की तरफ, डे 10 के। Alright, so now moving to day 10, question 2, the business scenario. The CFO, Chief Financial Officer, wants to identify the top three products within each year based on the total sales. Okay, now what does he want? Year, product name, total sales, rank within that year. Okay, only top three per year should appear. Okay, hence aggregate product per year. Okay, use a window ranking function. Ranking must reset per year. Okay, ranking must reset per year, that means partition. Yes, I remember from day 9. Okay, ranking reset, that means we have to apply partition, and filter after ranking things CTE. Okay, write it cleanly. Question 2. Now see, this is the best part about doing this challenge daily, because the pattern starts to appear up. For example, here whenever it is written that it should reset for each product, reset per year especially, so that you have to apply in the Windows function the partition. Okay, so when you have partitioned them by the products, it will reset each year. And okay, so partition, I think so it's partition. Now let's see what the query says. Now let's hit the query. तो डे 10 क्वेश्चन 2, CFO ये जानना चाहता है कि भाई जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं हर साल में वो कौन सी हैं, बेस्ड ऑन के पर जो सबसे ज़्यादा, तीन चीज़ें हर साल में कौन सी सबसे ज़्यादा बिकी हैं, ठीक है, ये CEO या CFO जानना चाहता है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसको चाहिए साल, प्रोडक्ट का नाम, टोटल सेल्स, और जो रैंक है उसका, मतलब वो कितनी बिकी है, ठीक है। और एक चीज़ है कि भाई सिर्फ टॉप 3 अपीयर होने चाहिए, ठीक है, टॉप 3 शुड अपीयर। एग्रीगेट पर प्रोडक्ट पर ईयर, ठीक है, एग्रीगेट पर प्रोडक्ट पर ईयर, यूज़र विंडो रैंकिंग फंक्शन में रैंकिंग फंक्शन यूज़ करे, और रैंकिंग मस्ट रीसेट पर ईयर, इसका मतलब पार्टीशन का कोई इशू है, पार्टीशन का कोई सीन है। और फिर उसके बाद हमने करना है फिल्टर आफ्टर रैंकिंग, तो इसमें भी 3 स्टेप्स हमने करने हैं। चलो ठीक है, लेट्स हिट द क्वेरी रिपोर्ट। Internet sales, select dim date, calendar year is year, specific, specific, specific English, English name. Okay, English product is product.
specific here. Total sales total sales sum sales amount is your date and let's say date की join in home backed internet sales join the okay so product की dim product dot product key. Okay, then we have to join group by adding product sales this now specific 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 here product name product name product name total sales
windows function, window ranking function, window ranking function. Variation. Name is or by name. It is ordered by, sorry, order by order is ranked. Okay, so now also is here. Okay, so there seems to be a problem with it. Okay, so I have to now apply the filter. To apply the filter, how did I apply the filter? How did I apply the filter? Partition by select, yeah, select, it is not from overall. Select a specific, okay, so comma, specific, select a specific year, product, name, total, dot sales, ranked product, ranked product, from from
There seems to be a problem here. Product rank product. Yeah, no mistake, it is this. Line filter where line filter where line less than 3 greater than equal to 3. Okay. Yeah. See. Okay. Yeah. Okay. Good. So we have come up with this for question 2, where the CFO wanted to find the top 3 products each year based on total sales. So what I knew after reading the question that I had 3 steps to follow. First was the aggregate of all the products, the total sale, and then it was the Windows function and the Windows function, and after that I had to apply the filter. Okay, with that out of the equation, then I move forward with my creating my first CTE, which was the total product sales. I selected the calendar year as my specific year. Okay, and then the English product name as product name, and the sales amount as total sales. And then I joined the respective dimension tables onto the fact tables and also grouped them by. Okay, and after that I went with the window function. So before moving forward, I asked the help of Gemini, and I said that if I want to, without going with the percentage, because for the percentage it is the percent rank or that percent rank or the cumulative rank, but most importantly it is the cumulative rank that's better. But I wanted to go without percentage, so I asked for Gemini for help, and it said that the dense rank formula is the best for standard reporting. Okay, so with that I knew that which rank function I had to use. I need these helps, I need these hints other than ChatGPT from Gemini, because these functions I'm using it for the first time. So it will need some time for me to understand them fully. So dense rank is used uh, for basically the top, you can use for the top 3 things. I didn't specifically mention top 3, but I said that without percentage, if I want to find the best rank, so it said that it is dense rank. So I applied the dense rank formula, and after dense rank formula I used over, and over means that it is the Windows function. It is a universal symbol, as I've already told you. So once you apply the window function, for example a dense rank with for an analytical purpose, with that over,
you kind of connecting that dense rank to the overall table or all the columns within which are available within your data. Okay, and then obviously because I wanted the ranking to reset per year, so I partitioned each of them by the product name. Okay, partition is very important here because if I want them to reset every year, I need to partition them, and then the routine order by total sales and in the descending order top to bottom, and then I assign it as ranked product, and I also gave it a name of the product rank. Okay, and then I went on to apply the filter. Okay, with the filter I went because I use the DESC here, and I learned from my question 1, so that then I use less than equal to 3 here. So less than equal to 3, we have our results here. Okay, now with that out of the equation, I think so our code looks fine, and the results are even good. So specific year rank 1. Okay, I think so it seems fine to me, but the thing is, if I think so it looks fine to me, it looks perfect to me. So if there would be any changes, if I think there are some changes, then I would be focusing on that also. Anyways, this is the solution which I came up with. I would share it with ChatGPT and let's see what ChatGPT has to say. तो वो इस सिंपल सीन था, ये सवाल मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे 3 चीज़ें समझ आ गई थी कि एक तो मुझे एग्रीगेट लेना है, ठीक है, फिर विंडो फंक्शन लेना है, उसके बाद रैंकिंग रीसेट करनी है, उसके बाद फिल्टर लगाना है, ठीक है। रैंकिंग रीसेट का मतलब मैंने पार्टीशन बाय यूज़ करना है, ठीक है। ये मैंने डे 9 में जो सवाल था उसमें मैंने सीखा था कि जब आप रीसेट करना चाहते हो कि वो हर प्रोडक्ट के लिए वो ले आए, तो फिर आपने उसके लिए पार्टीशन बाय लगाना है अपने विंडोज़ फंक्शन में बिफोर अप्लाइंग फ़िल्टर। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एग्रीगेट पे काम किया और सीटी बनाने पे काम किया। तो मैंने टोटल प्रोडक्ट सेल्स किया, और क्योंकि स्पेसिफिक ईयर वो बोल रहा है तो स्पेसिफिक ईयर के लिए मैंने कैलेंडर ईयर यूज़ किया, और इंग्लिश और प्रोडक्ट नेम भी उसको चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश प्रोडक्ट नेम सेफ इन साउंड। उसके बाद सम सेल्स अमाउंट सम किया, सो सेल्स अमाउंट को उसको मैंने कहा कि ये टोटल सेल्स है हमारा, और ये काम है कहाँ से करना है, फैक्ट इंटरनेट सेल्स से, ठीक है। तो अब उसके बाद क्योंकि हमने 2 डायमेंशन टेबल इसमें यूज़ किए हैं, एक है डेट की और एक है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने फैक्ट टेबल के साथ, और फिर मैंने ग्रुप बाय किया कैलेंडर ईयर के साथ और प्रोडक्ट नेम के साथ, ठीक है। उसके बाद ये किया प्रोडक्ट रैंक, ठीक है। प्रोडक्ट रैंक इसको असाइन किया क्योंकि अब मुझे रैंक का फार्मूला नहीं पता था अभी, क्योंकि मैं कम्युलेटिव लगाने वाला था। फिर मैंने कहा यार क्योंकि परसेंटेज की तो बात नहीं है, टॉप 10% की तो बात नहीं है ना, टॉप की बात हो रही है, कि मतलब एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट नंबर मुझे चाहिए। तो मैंने कहा यार विदाउट परसेंटेज कौन सा बेस्ट है अगर मैंने रैंक फंक्शंस पे काम करें, क्योंकि ये टॉप सवाल भी रैंक पे था। तो उसने कहा भाई आप डेंस रैंक यूज़ करें। मैंने कहा ठीक है, डेंस रैंक यूज़ किया। उसके बाद मैंने ओवर लगाया। ओवर का एक यूनिवर्सल सिंपल एक बैनुल अक़वामी साइन है। ओवर का मतलब ये है कि विंडोज़ फंक्शन में ये यूज़ हुआ है, ये विंडोज़ फंक्शन है, और ये ओवर जो है ये इस फंक्शन को इस पूरे टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सबके साथ वो कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन बाय, क्योंकि हमने रैंकिंग रीसेट करनी है हर उसके बाद, तो ये डे 8 में अगर आप मेरा लेक्चर दोबारा जाके देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई पार्टीशन बाय हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें मेरे से गलती हुई थी। उसमें मैंने जब पार्टीशन बाय के बगैर किया था तो उसने वो बिल्कुल रिज़ल्ट तो आया था, लेकिन वो फिर थोड़ा सा गंद आया था, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो हमने अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बाय आपने करना होता है कि ऑर्डर बाय क्या है, टोटल सेल्स है, ठीक है। और डिसेंडिंग मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम, और टॉप टू बॉटम। अब रैंक्ड प्रोडक्ट्स इधर आ गए, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट सेल्स इधर आ गई, और बाकी उसके बाद फिल्टर मैंने लगा दिया लेस देन DSC के बाद। लेकिन मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि ये जो नंबर्स हैं, यानी कि DSC मैंने लगाया हुआ है, फिर भी मैंने जब लेस देन का लगाया तो ये स्मॉल नंबर टू लार्जर नंबर मूव कर रहा है विद इन द वन रैंक। तो अभी मैं थोड़ा सा इस पर अभी आपके सामने थोड़ी सी ट्विकिंग करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सीन है, कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इसको ऐसा करके चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, जब आपने ग्रेटर देन ये किया तो रैंक 3 आ जाता है, और अच्छा अब अगर मैं ये
ख़त्म करूँ, ये ख़त्म करके ये लगाऊँ, फिर ये 26,000, 30,000, 32,000, 39,000। खैर है, चलो ठीक है। 2012, 13, 12, 13, ठीक है। ये 12, 13 पे टॉप 3 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। 12, 13 पे अगर हम इधर DSC लगाते हैं तो कितने साल आते हैं? DSC ठीक है, यही वाला। तो इसमें कितने साल आ रहे हैं? 13, 14 भी आ रहा है। और अच्छा, 13, 14 आ रहा है, ठीक है। रैंक प्रोडक्ट 3 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 3, 3, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओनली टॉप 3 ना। टॉप 3 आने चाहिए, तो फिर ये लेस देन होगा क्योंकि 1, 2, 3 हमें चाहिए ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर जब कर रहे हैं, कोई ग्रेटर देन 3 का कोई सिर्फ 3 का वो शो कर रहा है, तो इसको लेस देन करके इक्वल करेंगे, ठीक है। अब ये 1, 2, 3 हमें शो करेगा। हाँ ये चीज़ ठीक है, ठीक है। बस ये ठीक है, मुनासिब है। इसको ज़रा पेस्ट करते हैं ChatGPT पे, और ChatGPT हमें क्या क्या फरमाते हैं। ChatGPT हज़रत, इससे पूछते हैं। कॉपी पेस्ट। So after pasting it in ChatGPT, ChatGPT says, "All right, deep breath. Okay, this one has a major logical error, but it is a clean fix." Okay, so what is the core problem here? And I wrote dense rank, which is here. Dense rank over partition by product, order, and essay. Okay, let's translate what that means. You are ranking each product against itself across year. This is not what the CFO asked. Okay. So I have, I think so, misinterpreted the partition by. It is saying that I am ranking each product against itself across years. This is not the CFO has asked for. Okay. The business question asks top products within each year. That means ranking must reset per year. Okay. Ranking must set per year. Product competes against other products in the same year. Your partition is reversed. Okay, so that means partition is correct, because I wanted to reset each year. But it is not the product name, it is rather the specific year. Let me check, before even moving down, let me just write it here. A specific year. Okay, I'm not looking down. Okay, now why your query is wrong logically. With your partition by product name, you're answering for each product which were its top 3 years. This is a different business question entirely. In production, this would be considered misinterpretation of the requirement. Okay, so I have misunderstood the requirement of the question. Okay, what it should be, partition by specific year. Yeah, I told you, man, I told you. This was the problem. So the partition by was not a problem. It should reset itself year, but it was the specific year. Even before looking down, I understood that this was the case. Now products compete within the same year. Okay. Okay, so order date key. So what are some initial? So this was the major logical, because the partition by was correct because I wanted to reset it for the year. I had to focus on particular year. Okay, specific year. Okay, so I will not forget this. It is a worthy mentioning, because it was a great learning experience now. So minor additional notes: join key you used, fact internet sales. Okay, fact and due date key. The business question does not specify due date. Sales analysis usually use order date key. Okay, you are not wrong, but questionably analytically. Be intentional with date columns. Okay, it due date. Yeah, I think so. I wrong. This is a correct. It is order date key. Yeah, it is this key. I know that. This is the problem. Okay, final order by.
final order by total sales. This mixes years together. Okay, now this is some final order by total sales, which is mentioned in the line 16. And what does it do? It mixes year together. Better order by specific year and rank product. Reports must reflect business grouping. Okay, so it mixes the years together. Order by total sale, just simply. So what I have to do, I have to go to specific year and ranked products. Okay, must reflect business grouping. Okay, so correct version is which I have already done here. Okay, now the evaluation aggregation was good, ranking choice was good, partition logic was a major error. Yeah, I know that, man. The reset every year, it should have been, I should have not made this mistake, but anyways. So this was not a syntax issue, this was business logic translation issue. Those matter most. Those matter most. So yeah, it was a great learning experience here, and hopefully you also learned something. Now question 3 of the day 10, and let's move to question 3 now. चैट जीपीटी से मैंने पूछा है क्वेश्चन 2 के लिए, और लॉजिक इसके साथ मैंने शेयर किया है। तो चैट जीपीटी कह रहा है कि यार सांस लो गहरी, इसमें एक मेजर लॉजिकल इशू है, लेकिन ये ठीक हो सकता है। ठीक है, कोर प्रॉब्लम उसने कहा क्या है? तो कोर प्रॉब्लम वो कह रहा है कि भाई तुमने लिखा है डेंस रैंक, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन ओवर पार्टीशन बाय तुमने प्रोडक्ट नेम लिखा है ऑर्डर बाय टोटल सेल्स डिज़ाइन में लिखा, ठीक है ये तो सही लिखा है। वो कह रहा है कि यार जब तुमने लिखा है ना, अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ तुम्हारे लिए कि भाई तुमने क्या लिखा है। तुम जो कर रहे हो रैंक, ठीक है, डेंस रैंक का मतलब तुम रैंकिंग कर रहे हो हर प्रोडक्ट को अपने साथ अक्रॉस द ईयर। और ये सीएफओ ने पूछा ही नहीं, हाँ ये तो उसने पूछा नहीं, उसने तो साल का पूछा है। ठीक है, सवाल ये है कि टॉप 3 विद इन ईच ईयर, हर साल, और रैंकिंग जो है वो रीसेट हो पर ईयर। ठीक है, प्रोडक्ट कम्पीट अगेंस्ट अदर प्रोडक्ट्स इन द सेम ईयर, योर पार्टीशन इज रिवर्स। अच्छा, मतलब पार्टीशन का लॉजिक ठीक है, लेकिन पार्टीशन मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट के लिए इधर, हालांकि करना था साल के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। वाई योर क्यूरी इज़ रॉन्ग लॉजिकली, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट नेम से किया है। तो अब ये है कि अब मैं ईच प्रोडक्ट को कर रहा हूँ जो कि अपने 3 साल में है। ठीक है, जो टॉप में है 3 साल से। ठीक है, दिस इज़ डिफरेंट बिजनेस क्वेश्चन है। तो मैंने इसको मिस इंटरप्रेट किया है, तो मुझे तो हल्का हल्का समझ आ गया। मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट नेम है, पार्टीशन तो ठीक है, पार्टीशन जहाँ तक इस वर्ड ऑफ पार्टीशन ठीक है, मुझे इसको करना था किससे रीसेट हो, स्पेसिफिक ईयर के साथ। ठीक है, स्पेसिफिक ईयर के साथ मैंने इसको कर दिया। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ईयर, ये चीज़ ठीक है, मतलब ये ठीक है मतलब अब थोड़ा सा बन गया है। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है कि भाई तुमने ड्यू डेट लगाया हुआ है। हाँ ड्यू डेट लगाया हुआ है, इसका ड्यू डेट नहीं होता, आप ऑर्डर डेट लगाना होता है। हाँ ये तो पहले भी तो गलती मेरे से हुई थी, ऑर्डर डेट, ये माय बैड। ओके, उसके बाद फाइनल ऑर्डर पाए। तो फाइनल ऑर्डर पाए में जो रैंक 16 है उसमें तुमने टोटल सेल्स लिखा हुआ है। इससे ये होता है कि दिस मिक्स ईयर्स टुगेदर, ये सालों को मिक्स कर देता है। ठीक है, सालों बोल दिया, ईयर्स को मिक्स कर देता है, सॉरी। और इसकी जगह तुमने जो ग्रुपिंग जिस पे तुम्हारा टारगेट है ना, तुम उसको रिफ्लेक्ट किया करो। ठीक है, जो ग्रुपिंग आपका है तो उस पर आप लिखो स्पेसिफिक ईयर। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली रैंक प्रोडक्ट्स। ठीक है, उससे ये होगा कि करेक्ट वर्जन आएगा रेफरेंस के लिए। ठीक है, करेक्ट वर्जन ये है। बाकी उसने कहा एग्रीगेशन तुम्हारी ठीक है, रैंकिंग लॉजिक ठीक है, पार्टीशन लॉजिक भी ठीक है, बट यूज़ गलत था। ठीक है, मेजर बिजनेस रेपुटेशन तो बिल्कुल इनकरेक्ट था। ठीक है, तो फिक्स डिफ़िकल्टी इजी था। ठीक है, कोई नंबर नहीं था। ये सिंटेक्स का इशू नहीं था, इसमें तुम्हारा बिजनेस लॉजिक का ट्रांसलेशन का इशू आ गया। बैड लक। चलो ठीक है ठीक है, तो अब ये चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। पहले इसका रिजल्ट भी शो करते हैं फिर आपको। So I ran the query of question 2, and this is the result which I have. And yeah, there is
that is it. And there was some major learning mistakes. There was some major logical mistakes, especially for the specific year. And approach was correct, but execution was pretty bad. So moving forward, moving forward to question three. Question three, which is already highlighted as a harder question and more difficult than the previous two. So the business scenario is that the board of directors wants to know in which year did a product enter the top three for the first time. Okay, meaning product was not top three in the previous years but became top three in a given year. Okay, now this is some this is some very, just by reading the question you start to realize that it's a really difficult question. Now, meaning that the product was not top 3 in the previous years but became top 3 in a given year. Hence, you will need ranking per year, lag, or some way to check the previous year status. Think multi-step CTE. Filter only first occurrence of the top 3 status. Now, this is upper intermediate SQL. Take your time and answer question number 3. Now, it's a really difficult question. Now, let's move query board, shall we? तो भाइयों, ये क्वेश्चन 2 जो है इसका क्यूरी मैंने इधर अप्लाई कर दिया, रिज़ल्ट आ गया। और थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा ब्लंडर्स थे जो कि एक्सप्लेन कर दिए मैंने, और लॉजिक और पार्टीशन में सब कुछ ठीक, और बाकी सब कुछ चेक कर लिया। ओके सीन है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में ऑलरेडी कह रहा है कि यार ज़्यादा मुश्किल है पिछले 2 से, ठीक है, और ये काफ़ी मुश्किल हो रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब ये है कि जो बोर्ड है वो ये जानना चाह रहे हैं कि किस साल में वो लोग इन विच इट प्रोडक्ट इंटर, किस साल में प्रोडक्ट इंटर हुआ टॉप 3 में पहली दफ़ा, ठीक है। इसका मतलब पहले वो टॉप 3 में नहीं था और किस साल में वो टॉप 3 प्रोडक्ट्स में आया, ठीक है। हिंट्स ये है कि भाई आपने रैंकिंग पर ईयर करना है, लेग या किसी तरीके से आपने प्रीवियस स्टेटस चेक करना है। थिंक मल्टी स्टेप सिटीज़ पे आपने काम करना है। फिल्टर ओनली फर्स्ट अकरेंस ऑफ टॉप 3 स्टेटस। फिल्टर सिर्फ उस अकरेंस का करने के पहले कौन से साल में वो आया है, ठीक है। दिस इज़ नाउ अपर इंटरमीडिएट, टेक योर टाइम, क्वेश्चन 3। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ, अपने क्यूरी बोर्ड की तरफ, और इस पर जाकर क्यूरी लिखते हैं। Okay, so डिम डेट की डिम डेट की join join dim product
says product game. Okay, so Guru ended calendar year gym product English product name with product as
Barrier density leg cells leg ring current ranking. Product current ranking is this. So commodities product previous ranking product previous ranking is product previous ranking is from product current ranking select select specific year project name total sales and and leg current rank leg cu double leg current rank over top 3 leg top 3 over product specific a specific year is previous
rank. Previous rank.
So this is the situation. This is the situation for the question 3 query. Now I have been able to create this current context, and I've used Gemini's help. But I took the Gemini help by not pasting the question as it is, but rather in a way that I wanted to know whether I can ranking and the leg, how can I use them. So it kind of helped me with that because it was a difficult question, but this was the main issue. Now this case and when. Now obviously, they have. I have used this help from the Gemini to solve it, but still, it doesn't make any sense. This when and case, and I need better explanation for that. So I would be just pasting this query, but I think so. In the filtering part, it is wrong, and that is why it is intermediate. So let's go. Let's paste it. तो बॉयज़ ये सीन है कि मैंने यहाँ तक तो इसको लिख लिया था थोड़ा सा हेल्प लेके जिमेनाई से। जिमेनाई को मैंने कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन ये है कि उसको बताया था कि भाई मैं अगर लेग और रैंक फाइंड करना चाहता हूँ तो फिर उसको किस तरह फाइंड करूँगा। और वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन ये थी कि भाई रैंक को आप लेग में, क्योंकि लेग में पहले आप रेवेन्यू वगैरह हम यूज़ करते थे, तो मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि भाई रैंक इसमें यूज़ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अब इसमें सिर्फ ये पता चला कि भाई रैंक यूज़ हो सकते हैं, तो बाकी सारा मैंने किया है। लेकिन फ़िल्टर के लिए जब ये मैं पढ़ रहा था तो ये मुझे बहुत ही मुश्किल लगा, ठीक है, ये केस वैन वाला। और ये मुझे लगता है शायद एक नया स्टेप था जो ChatGPT मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आके फ़िल्टर की जो जितना मुझे नॉलेज है वो सारा ख़त्म हो गया है, तो अब ये होगा कि अब हम इसको ChatGPT में डालेंगे और ChatGPT से पूछते हैं कि क्या सीन है, ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। So I just pasted the query which I have learned in ChatGPT. Now ChatGPT said good structure. This is the strongest multi-city work so far. Now let's fix the logic precisely. Okay. First, what you did correctly aggregated per year. Rank product with each year. Use leg partition by product name ordered by year. Okay, that is correct architecture. Okay. Now the business requirement. In which years did a product enter top 3 for the first time? Now this was the question. Yes, entered the top 3 for the first time. Now let's translate this carefully. A row qualifies when the current rank is less than equal to 3 and the product was not top 3 in the previous year, either previous rank or the previous rank is null. That's it. Okay. Now this was the business requirement, and a product into top 3 for the first time. Translate that carefully. A row qualifies when current rank is less than equal to 3 and the product was not top 3 in the previous year. Either previous rank is greater than 3 or previous is null. That's it. Why filtering is wrong equal to. This means show rank where rank didn't change. This has nothing to do with intent top 3. This is a logical misunderstanding, not syntax, SQL syntax issue. Correct filtering logic where current is less than equal to 3 and previous rank greater than 3 or previous is null. This means that it is currently top 3 but was not previously, and that captures the first time it becomes top 3. Okay, all right. Important concept you have learned: current condition is true and the previous condition was false. It is a statement transition detection operation. It is extremely common in finance, attention analysis, means you are now entering real analytics territory. Final evaluation, multi-structure strong, ranking logic strong, lag usage correct, business filtering logic needs sharpening, analytical thinking improving noticeably. You didn't fail, you misunderstood the condition. That is normal at this level. If you want one final challenge before closing day, say final challenge. Okay, so I think the problem was with the filtering concept. Okay, so the filter was wrong, and I think so I misunderstood the question again.
the filter is wrong, because I told him that the filter is wrong because I forgot it. Now it is saying that the current rank is less than equal to 3 if it is less than equal to 3, and if the previous rank is greater than 3, or all, or the previous rank is none. So it is just like doing conditioning, either using logics. It is now using the logical statements here, which is considering the fact good. And let's see how it works. Okay, current rank 21, previous rank 21. Okay, so this was done. Now let's copy what this code has to say. Okay, yes. So there is nothing with the case and mod which Gemini was specifying to me. Paste. Now let's run it. Okay, current rank, previous rank, it was noted. Okay, so this is the correct filtering logic. And with that being said, we have achieved our goal for today, and obviously I will not be continuing forward with the day 3, and I will call it a day for day 10, because this was a new concept which I have learned, and I was able to work on multiple CTEs. And it is saying that, well, financial, otherwise we close the day here, and I'm saying that let's just close the day here. And this is a great learning point, and I would be deliberating on it also. And it helped, this filtering part, it is because I was focusing on this case when ready else steady, but this was the one which confused me. And anyways, I didn't understood the logic, so that is fine at this stage, as ChatGPT says that it's all part of learning, and we will learn it. And hopefully guys, if you have enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to turn on the bell notification on, so you do not miss any current updates from my channel, because we are on the journey to the 21-day learning SQL challenge. And hopefully by day 21 we are able to grasp the concepts of SQL. Okay, so I'm signing off for today, and hopefully I will see you soon in the next video, hopefully. And take care of yourself. Allah Hafiz. Bye bye. This is Mohammed Nisar Khan signing out. तो ये चैट जीपीटी को साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की थी। चैट जीपीटी ने कहा कि यार CTEs पे आपने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। उसमें जेमिनी की थोड़ी सी हेल्प ली थी मैंने, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसको सब पूरा सवाल मैंने नहीं दिया था, मैंने इसको कहा था कि भाई क्या मैं रैंकिंग पर ईयर के साथ लेग भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें मुझे कन्फ्यूजन थी, क्योंकि लेग जो रैंक है वो कोई इस तरह नंबर के मतलब कन्फ्यूजन थी, वो थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल एरर वो दिमाग में चल रहा था। तो उसने कहा कि भाई CTEs पे आपने काम अच्छा किया है। उसने कहा सबसे पहले काम तो आपने एग्रीगेट ज़बरदस्त निकाला है, एग्रीगेट तो निकाल ही रहा हूँ, रैंक भी सही किया है, लेग भी तुमने सही किया है, जिसको तुमने पार्टीशन किया प्रोडक्ट नेम और ऑर्डर बाय ईयर, ठीक है, करेक्ट आर्किटेक्चर। अब ये था कि भाई जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि भाई एक प्रोडक्ट टॉप 3 में पहली दफ़ा कब इंटर हुई है, कौन से साल में इंटर हुई है, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर तुम गौर से इसको पढ़ो इस सवाल को, तो इसका मतलब ये है कि जो करंट रैंक है, अगर वो 3 या 3 से कम है, और ठीक है, टॉप 3 में इंटर हुआ 3 या 3 से कम है, और या उसका जो पिछला रैंक है पिछले साल मतलब लेग वो 3 से ज़्यादा है, या पिछला रैंक है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ को तुमने क्वालिफाई करना है, उसको मुझे दिखाना है कि भाई ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो अगर तुम्हारा फिल्टर ये रॉन्ग है, तो मैंने उसको ये ऑलरेडी कहा था ऊपर क्यूरी के साथ कि मतलब इसमें प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं है। तो उसने कहा भाई ये लॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपका लॉजिक का मसला था, और ये सिंटेक्स इशू नहीं था। क्योंकि जब मैं ये कर रहा था ना, तो ये जब केस वाली बात आई है इधर,
इसमें मुझे कन्फ्यूजन हुई। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया था कि मतलब न्यू एंट्री केस वेंस, क्योंकि इस पर कभी काम नहीं किया मैंने, ये पहली दफ़ा आ रहा था। तो मैंने दोबारा ChatGPT का इस पे जाके मैं कंफ्यूज हुआ, उसके बाद मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो अब ये करेक्ट फिल्टरिंग लॉजिक उसने कहा ये है, ठीक है, करंट रैंक ये और प्रीवियस रैंक ये। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ करंटली टॉप 3 बट प्रीवियस इट वाज नॉट। इसका सिर्फ मतलब ये है अभी टॉप 3 में है, पहले नहीं था। दैट्स कैप्चर फर्स्ट टाइम इट बिकम्स टॉप 3। तो ये जो फर्स्ट टाइम बिकम्स है ना, इस पर बंदा कंफ्यूज हो रहा था। सवाल सिंपल ये था कि भाई अभी टॉप 3 में, पहले नहीं था या था, बस सिंपल। तो इसको जब हमने इधर शो किया, ठीक है, अब इसको रन किया हमने, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गई, ठीक है। तो उसने कहा कि करंट रैंक 1 है, पहले नल, पहले था ही नहीं, पहले 10वां रैंक था, अब ये। अब इस चीज़ के बाद ये फ़िल्टर अच्छा लगा, फ़िल्टर हम सही लगा सके और फ़िल्टर काम कर गया, ठीक है। करेक्टेड वर्जन ये है, ठीक है, वो बाकी सब कुछ तो ठीक था। उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुमने लड़ा है वो ये कि जाना है, समझ आई है, वो ये कि करंट कंडीशन ठीक है, अभी वो टॉप 3 में है, मगर पहले नहीं थी, प्रीवियस कंडीशन वाज फॉल्स। तो ये एक स्टेट इज ए स्टेट ट्रांजिशन डिटेक्शन पैटर्न, ये एक स्टेट ट्रांजिशन डिटेक्शन मतलब अभी जो प्रोडक्ट है उसकी किस हालत में है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए ये स्टेट डिटेक्शन, और ये अमूमन रिटेंशन एनालिसिस में यूज़ होता है, फाइनेंस में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। और उसने कहा कि भाई इसमें सिर्फ ये फिल्टर का लॉजिक का प्रॉब्लम था, अदरवाइज़ ये सारा कुछ ठीक था। तो फाइनल इवैल्यूएशन उसने कहा कि भाई मल्टी सिटी स्ट्रक्चरिंग स्ट्रॉन्ग है, रैंकिंग लॉजिक ठीक है, लेग भी ठीक है, बिजनेस फिल्टरिंग लॉजिक इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है आपने। मुझे कहा तुमने फेल नहीं किया, लेकिन तुम्हें कंडीशन समझ नहीं आई, दैट इज़ नॉर्मल दिस लेवल। अभी भी फेल ही हुआ, लेकिन खैर है, अब ChatGPT ने कह दिया कि मतलब कोई खैर है, कोई बात नहीं, तो फिर खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप एक और फाइनल चैलेंज चाहते हैं डे 10 क्लोज करने से पहले, तो फिर बोल दो फाइनल चैलेंज, अदरवाइज़ हम यहाँ बंद कर दें, क्योंकि वो भी समझ गया कि भाई ये उस्ताद का प्रोग्राम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है। उसको भी पता चल गया कि अभी इतना ज़्यादा एक दिन में बंदा सीखे ना, तो फिर वो उतना ज़्यादा भी नहीं सीखना चाहिए, कम कम लेकिन डेली, ताकि वो फिर कंपाउंड होना शुरू हो जाए। तो खैर मैं तो कहूँगा कि इससे आगे हम नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है, और हम 2 घंटे का सेशन भी रखना है, 2 घंटे के सेशन, 2 घंटे के अंदर इस सेशन को कंप्लीट करना है। तो विद दैट बिंग सेड, ये डे 10 की वीडियो थी आफ्टर 21 डे लर्निंग सीक्वल चैलेंज। होप एवरीवन एंजॉयड इट। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और मेरी प्रोग्रेस देखी, जो कि इस टाइम तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो गई है। मतलब 1-2 दिन जब इसको रेगुलर, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं, आप रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। और अभी हमारा 21 डे चैलेंज तक जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप मेरी जर्नी को बखूबी रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहें। और होपफुली ये होगा कि 21 दिन बाद ये कुछ ना कुछ मुझे समझ आ जाएगा, और फिर हम बढ़ेंगे फ्रीलांसिंग की तरफ। और फ्रीलांसिंग के बाद हम पोर्टफोलियोज़ पर काम करेंगे, उसके बाद फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो वो सारी जर्नी आपने देखनी है, ताकि होपफुली आपको एक मोटिवेशन मिले कि एक अगर कंसिस्टेंटली अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप यू कैन अचीव योर सक्सेस। एनीवेज, टेक केयर, दिस इज़ मी मोहम्मद निसार खान साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।